So very good evening class. Today we will be discussing about some important question in this MCQ class number 10 CUET exam journalism and mass communications. आज हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं MCQ क्लास नंबर 10 में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट द सेशन दैट MCQ क्लास नंबर 10 ऑफ द CUET एग्जाम एंड दिस प्लेलिस्ट ऑफ द CUET एग्जाम प्रिपरेशन इज very important. You should must ensure that you have watched all the videos, all the MCQ class videos before going into the exam hall, right? एग्जाम हॉल जाने से पहले आपने सारे MCQs वीडियोस आप जरूर देखे हो, ये आपको सुनिश्चित करना है, right? These all are important question series that we had conducted and we are uploading continuously, right? For the CUET exam especially. So please be attention here. So let's start the sessions. So here the first questions that is here, adjusting the photo for publication by cutting it technically known as what? Everybody please answer what the right options of here the question it is. So options are here, very simple questions. If you look over on the images also you will get an hint, right? आपको hint मिल जाएगा कि जब वो फोटो को एडजस्ट करना हो पब्लिकेशन के लिए या फिर आपको फोटो को कट करना हो, so what it is basically known as technically. So it is known as, the right answer here it is, that is C, that is called photo cropping. उसे क्या बोलते हैं? Photo cropping बोलते हैं. When you remove the unwanted outer areas, and technically it is known as photo cropping, which is the adjusting the photos for publications. Okay, now let's move to the next question, that is it's about the feedback, right? So what the feedback is here about a message. So feedback of a message comes from सैटेलाइट मीडिया ऑडियंस कम्युनिकेटर. एवरीबॉडी, सो मैसेज का जो फीडबैक होता है वो कहाँ से मिलता है? सैटेलाइट से मिलता है, मीडिया से मिलता है, ऑडियंस से मिलता है या फिर कम्युनिकेटर से मिलता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इट इज, राइट? वेरी कॉन्सेप्चुअल एंड द फंडामेंटल क्वेश्चंस इट इज. एवरीबॉडी प्लीज आंसर. सो राइट आंसर हियर इट इज दैट इफ यू वुड take the help of the images also, that is the survey, opinion, response, idea, advice, result, rating, these all are the feedbacks, right? So that is what the feedback of masses comes from the audience, right? Very good. So the right answer it is here, the audience, right? So in the communication process, even feedback refers to the response from the receivers, which gives an communicator an idea of the how message is being received and whether it needs to be modified. So you know the feedback, that is when you read the process of the communication, that is sender, message, channel and receiver, right? That is an basic here it is, that is SMCR. But when you will understand into more detail of the process of communication, that is basically, that is it's here it is encoder, right? The sender, message, channel, that is decoder, receiver. Okay, so it is an important to note it down about this here, this all process of the communications, and similarly there is a feedback, right? So if you would read here the Osgood model of communication, which is also known as circular model of communications, where the feedback was observed from sender becomes receiver and receivers become sender, that the communication is always cyclic in the nature. That is what the feedback of a message comes from the audience only, right? सिर्फ audience से आप क्या करते हो? feedback लेते हो, ठीक है? That in the forms of the comment, that I would take the feedback from you all, that you would do the comment, right? How much you have in like this videos, right? So that is what it's about, the feedback which you will give in the form of like or dislike or share or in the comment, or maybe in the form of the other things that you would respond as in the email and the many of the things. Okay, now here the another question, it is about the collection of information in advance before designing communication strategy is known as. Everybody please answer, बहुत ही important questions है. collection of information, जब आप किसी बेटर और बेस्ट स्ट्रैटेजीज, कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी के लिए कोई एडवांस में आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट टू अंडरस्टैंड, दैट इज एडवांस, राइट? सो एडवांस में जब आप कोई चीजें आप लेते हो, दैट इज व्हाट इट्स अबाउट, द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, दैट इज फीडबैक, फीड फॉरवर्ड, रिसर्च, स्टडी, ओपिनियन पोल. क्या होता है? So as you can see in over the new channel also on the newspaper as well, the various opinion poll is there. That opinion poll is the right answer. That opinion poll
often simply referred to as a poll or the survey in a human research survey of the public opinion from a particular sample. So क्या आप लेते हो? That is you take the belief, right? उन लोगों का क्या सोच है, क्या परसेप्शंस है, क्या एटीट्यूड है, क्या बिहेवियर है, क्या उनके यू कैन से अबाउट देयर क्या सोचते हैं. सो दिस ऑल आर बेसिकली इन द इलेक्शंस आल्सो दैट यू टेक द ओपिनियंस ऑफ द पब्लिक दैट हाउ टू whom they had given the vote, right? So opinion poll के अनुसार जो है ये चीजें आती है, रिजल्ट निकल कर आता है that by the media basically as you can see as the opinion सीएम पर आपकी क्या पसंद है, जनता की क्या पसंद है, राइट? बीजेपी, कांग्रेस, भाजपा, आप. सो इस तरीके से क्या है, दैट इज the perceptions and the attitudes and the behavior is measured in advance, that in order to make the best strategies for designing the communication strategies, it is very important to collect the informations in advance. That is what it called in technically opinion poll. Okay, chale. Next, that is here to important to understand another questions, that is the university which telecasts the interactive educational programs through its own channel is what? Everybody please answer. उस यूनिवर्सिटीज का नाम बताना है जो इंटरैक्टिव एजुकेशनल प्रोग्राम्स अपने चैनल्स अपने चैनल से वो ब्रॉडकास्ट करते हैं. जल्दी से बताएंगे. एवरीबडी विच टेलीकास्ट इंटरव्यूज एजुकेशनल प्रोग्राम्स थ्रू इट्स ऑन चैनल. दैट इज बी आर अम्बेडकर इन ओपन यूनिवर्सिटीज, इग्नू, यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे एंड अमलाई यूनिवर्सिटीज, राइट? एवरीबडी प्लीज आंसर which one of the following is the most appropriate answers. And you can see that is IGNU, Indira Gandhi National Open University is the university which telecasts the interactive educational programs through its own channel. And name of the programs it's that here, that is might have been known about Gyan Darshan. ठीक है. Gyan Darshan is a channel which major milestone in the field of the education television in India, and that by launched by the IGNU, right? So this is a very important to note it down, that is by the IGNU which launched the channel, that is Gyan Darshan, which is a interactive educational program. Okay, very good. So this is an important, please note it down, right? So it was named after the ex-prime ministers Indira Gandhi, that IGNU, okay, in 1985. चलिए. Next, that is to know it about in communication chatting in internet is, right? इंटरनेट के अंदर जब हम चैटिंग वाली कम्युनिकेशन करते हैं, दैट इज ओवर ऑन द व्हाट्सएप, राइट? और व्हेनेवर एनीबडी इज ऑनलाइन, तब उस समय जो हम कम्युनिकेशन करते हैं, दैट व्हाट टेक्निकली इट इज कॉल्ड. कम्युनिकेशन की भाषा में उसे हम क्या कहते हैं? वर्बल, नॉन वर्बल, पैरेलल और ग्रेपवाइन कम्युनिकेशंस. एवरीबडी प्लीज आंसर. So right answer here it is, if you would know that you can take in the hint of the from the images, that is serial transmission versus parallel transmissions, right? So this is what when we do, when we online over on the WhatsApp and some or on the applications, some other applications, that is what how the datas and the bits are here sent and received, right, simultaneously. So that is what it's here, that it is being sent and being received. That is what that in data transmission, parallel communication is a method of conveying multiple binary digits simultaneously. You can see that is here the single binary digits it is being transferred, whereas in multiple binary digits in simultaneously is being transferred. That is what it's called parallel communications, right? So chatting जो हमारा example है वो parallel communication का example है. ठीक है. Verbal communication, that is oral and written communication. Non-verbal communication is the sign and symbols communications, right? So that is an important to know it. Grapevine communication is an on one kind of the informal communications that can be as an जो हम फालतू की बातें करते हैं और किस तरीके का, that informal kind of things that we gather together and do some kind of the communications there. So that is what it's about, the grapevine communication. This is also that rumors is majorly spread through the grapevine communications only. So that is what it is, not a formal, it is informal type of communications. Okay, चलिए. Next, that is to understand as an what is blog. Blog क्या है? Online music है, intranet है, a personal or corporate website in the form of online journal, or a personal or corporate Google search. Everybody please answer. Blog क्या है? वेरी गुड. सो राइट आंसर इट इज हेयर, दैट इज सी, राइट? सी जो है बिल्कुल सही है. ब्लॉग हमारा क्या एक डायरी की तरह है जहां पे हम रोजाना अपडेट करते हैं, राइट? इट इज अ पर्सनल और द कॉर्पोरेट वेबसाइट इन द फॉर्म ऑफ एन ऑनलाइन जर्नल, राइट, वेयर यू publish the daily routines work, right,
or that may be in context of the diary which you were being used in the uh, before digital, right? That can be called as a traditional system, that diary systems. Now it is an electronic form, which is a blog basically, that may be in the form of any kind of the blog, could be your niche blog, could be, right? So that is what a discussion or the informal website, right? uh, आप कह सकते हो कि किसी भी तरीके का एग्जाम्पल, देर इज नॉट नेसेसरी दैट कुड बी ऑफ द मिक्स मिसलेनियस चीजें हो सकती है, किसी भी तरीके का फूड ब्लॉगिंग हो सकता है, that may be of the any kind of the things that could be followed, that could be on the music blog, educational blog, right? Any kind of the things that be could be there, and that is in the form of majorly website, right? Which is basically in the form of an online journal also, that could be as an personal or the corporate website. चलिए आगे बढ़ते हैं. What is social media optimization? Social media optimization क्या है? We had listened over on that search engine optimization. There is a differences between the SEO and the SMO. Search engine optimization हमारे जो है वेबसाइट की ट्रैफिक के लिए होती है, that how to increase more traffic over on the website. So you have to go with the SEO, that is search engine optimization, which to be included in while writing the content and all. But what the SMO? SMO क्या है? Search social media optimization से, and what it is? So options are here given. We choose the appropriate one. Which one is the right answer, right? So if you would look on it, the images as well, you will understand the right answer. It is here. That is A. Creating content which easily creates the publicity via social networks, because we are talking about the social media. So here it is also the social networks, right? So that is creating the content, whatever the content which you create. So that could be more वायरल, ज्यादा से ज्यादा वायरल कैसे बनाए कंटेंट और लोगों तक कैसे पहुंचे, ठीक है? और उसमें हमारे क्या है, वायरल हो कंटेंट, पब्लिसिटी हो, ज्यादा लाइक मिले, ज्यादा शेयर मिले, ज्यादा व्यूज मिले, ज्यादा ट्रैफिक हो, ज्यादा लोगों तक पहुंचे. सो दैट मेजरली द एम ओवर ऑन द सोशल मीडियाज दैट ऑफ द कॉर्पोरेट कंपनीज एंड ऑल, राइट? सो इसी के लिए वो सोशल मीडिया पे अपने अकाउंट बनाते हैं, पेजेस बनाते हैं, एंड दे डू द एसएमओ, दैट द बेसिकली क्रिएटिंग अ कंटेंट विथ इजिली क्रिएट्स पब्लिसिटी वाया सोशल नेटवर्क्स, राइट? चलिए नेक्स्ट जो है आपका information, a combination of graphics, text, sound, video and animation is called what? As you can take the hint from the images also, कि जब हमारे पास information हो और वो ग्राफिक्स, टेक्स्ट, साउंड, वीडियो, एनिमेशन हर कुछ मिला हो उसमें, सो हम उसे क्या कहेंगे टेक्निकली? सो दैट इज व्हाट हियर द ऑप्शन इट इज गिवन. यू कैन टेक एन द हिंट फ्रॉम द इमेजेस व्हिच ऑलरेडी इट इज रिटन, दैट इज मल्टीमीडिया, राइट? मल्टीमीडिया मीन्स बहुत तरीके के मीडिया विच इज इंक्लूडेड इन सच. So that is graphics, text, sound, video and animations is included in the media, that is called multimedia, right? चलिए next, that is an important to note it down about the questions. Where can you view your editing progress in the video software? अगर आप वीडियो एडिटिंग करते हैं और वीडियो सॉफ्टवेयर अगर आपने कभी देखा है, ओपन भी किया है एटलीस्ट, और बेसिक भी जानते हैं, तो आप इसका सवाल इस सवाल का जवाब आप दे सकते हैं, ठीक है? तो एडिटिंग प्रोग्रेस जो है, जहां पे एडिटिंग प्रोग्रेस वो देखी जा सकती है, कट होता है, क्रॉप होता है, ट्रांजिशन डलते हैं, ऑडियोस में एडिट की जाती है, राइट? सो लॉट ऑफ द वर्क्स विच इज डन ओवर ऑन, दैट इज व्हाट कॉल्ड in the editing software. Everybody please look on over on the options, that is editing effects folder, file folder, video clips और timeline. So right answer here it is timeline. उसको हम क्या कहते हैं? टाइमलाइन कहते हैं. अगर आपने देखा इस तरीके की इमेजेस में, that I would like to draw it here like in this way, the layers are there, right? इस तरीके से क्या होता है, लेयर्स होता है, और यहाँ पे आपके टूल्स होते हैं, राइट? इफ यू लुक ओवर ऑन द एडोब प्रीमियर प्रो एज वेल, देयर आर द टूल्स लाइक द ब्लेड वगैरह, सारी चीजें यहाँ पे होती है, राइट? इफ यू लुक ओवर ऑन द अदर सॉफ्टवेयर्स, सो यहाँ पे कुछ आपके साउंड्स लाइक देयर इज द वीडियो प्लेयर, देयर ऑडियो, देन अगेन वीडियो, देन अगेन ऑडियो, राइट? एंड हियर you will keep your videos here. There would be a scrubber. यहाँ पे क्या होगा, स्क्रबर होगा, एंड यहाँ पे सारे क्या होंगे, आपके लेयर्स पे अलग अलग वीडियोस होंगे, एंड यू विल व्हाट, यू विल डू एडिटिंग. दिस इज व्हाट इट कॉल्ड, इसी को क्या कहते हैं, टाइमलाइन कहते हैं, ठीक है? सो दिस इज व्हाट वेयर यू कैन व्यू योर एडिटिंग प्रोग्रेस इज कॉल्ड टाइमलाइन, ठीक है? चलिए नेक्स्ट इट इज हियर that find out the correct sequence of the internet address. इंटरनेट एड्रेस का करेक्ट सीक्वेंस क्या है, ठीक है? अगर आप गूगल
यूज करते हैं या फिर कोई कुछ भी इंटरनेट पे अगर आप सर्च करते हैं, सो वहाँ पे एक यूआरएल होता है। उस यूआरएल को आप ठीक से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको एक अलग तरीके से आपको अलग अलग टाइप का इंटरनेट एड्रेस मिलेगा। सो व्हाट आर बेसिकली इन अ सीक्वेंस इट इज, राइट? सो दिस इज लिटिल बिट टेक्निकली बट यू कैन आंसर बिकॉज दिस इज दैट व्हाट वी यूज इन डेली लाइफ, राइट? जिसको हम अक्सर जाते हैं लेकिन टेक्निकल नाम से हम नहीं जानते हैं। तो प्लीज जो है आप लोग इसे पिक्चर इमेज जो यूज हुआ है उसको देखकर आप भी बता सकते हैं, राइट? सो देयर इज अ दैट इज http it is here, right? The first it is go with the https or https, then it is there www, and then it is the main website name, that is name of the website, that could be the jamesstudyhub.com, that could be the youtube.com, that could be the amazon.com, flipkart.com. This is the main here, it is what called domain. इसको इसको क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। और जो .com .in .org होता है उसे हम बोलते हैं टॉप लेवल डोमेन, राइट? सो ये दोनों क्लियर हो गया। दैट डॉट गूगल को क्या बोलते हैं? डॉट गूगल नहीं, यहाँ पे कुछ भी होगा, any domain name would be, that is what it called domain name, right? Name could be of the anything or any companies which is having a website, right, on their own name. So that is domain name, and .com that is called top level domain, or in the short it is called TLD. वहीं पे www को क्या बोलते हैं? सब डोमेन बोलते हैं। और http और https को हम क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल बोलते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, राइट? आपको पता होगा http और https। https इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, और यहाँ पे http होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिमिलरली बहुत सारे एब्रिविएशंस आईसीटी में यूज होते हैं, वो सारे आपको जानना जरूरी होता है। एज एन TLD दैट इज टॉप लेवल डोमेन, राइट? एज एन ICT that is what information communication technology, right? Similarly that is LAN, that is local area network, that is WAN, that is wide area network, right? Similarly lot of the thing that is IP, that is internet protocol, right? Similarly there are the lot of the abbreviations this is which is very common in a day, ठीक है? So in today's, so definitely you have to know it, this all terminologies or the terms which used in everyday's life, ठीक है? So that is what it is here. The sequences of the internet address is right answer. It is here protocol, right? So according to the images, you can answer that is protocol. It is what the here it is HTTP. Then it is here it is the domain name, right? So domain name के बाद आपका top level domain, as you can see .com .org. Similarly that is a specific file. Specific file क्या होता है? Specific file आपका .com के बाद ऑब्लिक लगता है, ऑब्लिक लगने के बाद जो भी फोल्डर्स की लोकेशन होगी वो लोकेशन यहाँ पे होगा, और द पेजेस नेम वुड बी, राइट? जो भी पेजेस है, लाइक देयर वुड बी कैन द DMCQ, देयर कुड बी एन द could be of the any folder name could be there which we had where we have saved the data, जहाँ पे हमने अपने डेटा को सेव किया हुआ है, ठीक है? चलिए next that we will move towards the site. What the site stands for, the acronym for, everybody please answer. Site, that is that what the right answer it is. If you look over on these options that you would get here, the right answer it is that it is not the A, it is wrong answer here it is. That is, if you would look on it, that is the answer B it is, right? That is satellite instructional television experiment, right? So please note it down, this is a typo error, right? This is the B answer is the right answer, right? So satellite instructional television experiment which is called SITE, right? So जब इंडिया में टेलीविजन आया उस समय उससे पहले साइट एक्सपेरिमेंट किया गया कि टेलीविजन हमारे कितना फायदेमंद पहुंचाएगा हमारे इंडिया को, ठीक है? उसके लिए एक्सपेरिमेंट किया गया, दैट इज व्हाट कॉल्ड सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। और किन की मदद से हुआ? इसमें नासा की मदद ली गई और हमारा इसरो था। व्हाट द नासा इट इज? नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। व्हाट द इसरो इज? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, राइट? इसमें हमारे 2400 विलेजेस थे, ठीक है? इसमें हमारे 6 स्टेट्स थे, राइट? प्लीज नोट इट डाउन, ये हमारे कितने स्टेट थे? इसमें 6 स्टेट थे, 2400 विलेजेस थे और 20 डिस्ट्रिक्ट थे, राइट? को इन्वॉल्व किया था, जिनके ऊपर टेस्ट किया गया, दैट एक्सपेरिमेंट किया गया। So this is an important, and when it was, that was for 1 year only, that is from 1975 to 1976, okay? And if you note it down about the date also, that is from the 1st of August, that is 31st July 1976,
Okay, so this was for the 1 year and jointly designed that by the NASA and ISRO, right? So that is what about the site experiment. Chale, next it is that which is the 24 hours English business news channel in India? Everybody answer. So options are here, that is G News, NDTV 24 into 7, CNBC and India News. What the right answer here it is? So right answer it is CNBC, right? CNBC stands for Consumer News Business Channel. ठीक है, क्या होता है? Consumer News Business Channel, which is a 24 hours English business news channel in India. We have to note it down. This all important, right? So it was launched in 1989, right? CNBC is an American pay television business news channel which is owned by the NBC Universal Broadcast, right? So these all are here important. Now moving toward the next question, that is what the LAN stands for. Recently we had discussed about the full form of the LAN. So what here the right option it is? If you would go through the questions and options, you would answer that the right answer here it is, that is B, local area network, right? So that is LAN. Similarly, there are several networks, that is LAN, MAN, WAN, right? CAN, PAN. बहुत सारे नेटवर्क्स होते हैं, दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, कैंपस एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क, राइट? सो पर्सनल एरिया नेटवर्क से हमारा स्टार्ट होता है और हमारा वैन जो है सबसे वाइड एरिया नेटवर्क होता है, राइट? सो दिस इज व्हाट द यू कैन से एज एन it starts from here pan personal area network and that is ends with the WAN, that is wide area network, right? Our telephone lines is over on the WAN, that is wide area network. ठीक है, चलिए. Now the next it is to understand which one of the following units is measured to measure the intensity of the noise. Noise की intensity measure करने के लिए कौन सी units का प्रयोग किया जाता है? Decibel, Hertz, Fon, watts per meter square. Everybody. So what the right answer here it is? If you would notice this, so right answer here it is, that is A, decibel. ठीक है, हमारा साउंड जो होता है, साउंड जो है हमारी डेसिबल से मेजर की जाती है, राइट? इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. और जो हर्ट्ज है दैट इज फ्रीक्वेंसी से मेजर की जाता है, ठीक है? सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, दैट इज फ्रीक्वेंसी, इट इज मेजर्ड बाय द हर्ट्ज एंड वेयर एज that sound is measured by the decibel. These all are the units which to measure the intensity. Next here it is about the softwares, that Corel Draw is a popular software. किस तरीके का ये सॉफ्टवेयर है? प्लीज आंसर इट, बिकॉज दिस यूज इन द मीडिया, ये मीडिया में यूज होता है, so इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. दैट इज व्हाट इट इज हियर. आई एम गिविंग यू द हिंट दैट द न्यूज़पेपर आप इससे रिलेट कर सकते हो, ठीक है? यस, सो राइट आंसर इट इज दैट हियर द इलस्ट्रेशन प्रोग्राम, राइट? कोरल ड्रॉ जो होता है वो हमारा दैट वेक्टर बेस्ड डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है विच इज यूज टू क्रिएटिंग लोगोस, फ्लेक्स और द ब्रोशर्स, इनविटेशन कार्ड्स, हर तरीके का आप क्या कर सकते हो, वेक्टर काइंड ऑफ डिजाइन कर सकते हो. और वेक्टर और रास्टर क्या होता है? देयर इज अ सेपरेट वीडियो विच इज मेड ओवर ऑन द डिफरेंसेस बिटवीन द वेक्टर एंड द रास्टर. सो please you can watch the short videos on the vector and raster, right? So if you are not having this videos link, you can go over on the descriptions and there you will find some related shorts videos, right? Chaliye, so this is it, which about the software. Now an email address is composed of, email address जो होता है वो कितने पार्ट से मिलकर बना होता है? एवरीबॉडी, आप अपनी ईमेल आईडी का एग्जांपल ले सकते हो कोई भी, right? As you can write it here that like for an example abc@gmail.com, ठीक है? ये हमारा हमने क्या लिया? एग्जाम्पल लिया, abc@gmail.com. Now you tell email address is composed of how many parts, right? So you would see here answer that is 2 parts. कौन कौन से 2 parts होते हैं? ये आपका एक पार्ट है और ये दूसरा आपका सेकेंड पार्ट है, राइट? सो इट इज हैज हियर, इट इज कॉल्ड यूजर नेम और ये आपका क्या है? इट इज कॉल्ड डोमेन नेम, ठीक है? दिस इज फॉर द ईमेल एड्रेस विच इज बेसिकली कॉल्ड 2 parts, right? Composed of 2 parts. Now the next it is here to know it about DPI. DPI क्या होता है? What the DPI stands for? DPI क्या है? If you are using any kind of the software like the Adobe Premiere Pro, sorry, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw, कैनवा, ये सारी चीजें आप कुछ डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर यूज करते होंगे तो आपको डीपीआई बहुत जरूरी है समझना. इवन इन द प्रिंटिंग एज ऑल्सो डीपीआई इज इम्पॉर्टेंट. इवन इन द जब आप पेंट को यूज करते हो दैट इज ऑल्सो एज एन इम्पॉर्टेंट, राइट? सो आपको डीपीआई यहाँ पे
मिलता है देखने को. What it is here? So right answer it is here, that is dots per inch, right? That is what it is, DPI. DPI क्या होता है? Dots per inch, which is a measure of the spatial printing video or the image scanner dot density in a particular. The number of the individual dots can be placed in a line within a span of 1 inch, right? So ये आपका क्या है, पर इंच में, 1 इंच में कितने डॉट्स होंगे, वो डॉट से आपका क्या होता है, that it talks about the qualities of the printing, right, or the picture. So that is the main thing it is to understand as an DPI when it will be print, right, given as an print command. So what quality will give it? So that is what here it is as an DPI. So this was all about which we had to discuss the questions. A lot of the questions related to the some ICTs and technological questions were there. So that you have to talk it about, right? So cropping, DPI, HTTPs, LAN, WAN, CAN, MAN, ये सारी चीजें हमने देखा, right? Lot of the email address we had seen, Coral Draw we had seen, right? The intensity measure line we had seen, new channel we had gone over, experiment, site experiment, chronological address, that of the internet address, IP address we had the what it called basically of the URL, that is one URL we are talking about, what the abbreviation of the URL it is, that is Uniform Resource Locator. Uniform Resource Locator, ठीक है. ये सारी चीजें abbreviation please note it down. Like I would ask you that what is the full form of PNG? PNG क्या होता है? That is JPEG क्या होता है? Right? So JP is like that is the Joint Picture Expert Group, right? This is what it is here. You would tell in the comment section that what the full form of PNG, right? Please tell. So this video we had talked about the ICT and that is what it is an important, right? So this was all about which we had discussed this question. These all are very very important questions. सारे important question थे जो हमने discuss किया, आपके exam के लिए बहुत important है. Please look on it, right? So in the upcoming class we will be discussing about the next questions. कुछ अगले अच्छे questions हम और discuss करेंगे CUET exam के लिए.